अच्छा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं केस 1। ठीक है, फिज़िक्स 10 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत केस 1 हमारा है when both the bodies move vertically। ठीक है, ये बात बेसिकली ये जो केस 1 है ना, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली टेंशन का टॉपिक। फिज़िक्स की एक टर्म है टेंशन जो फोर्स से लिख ली है, उसके 2 केसेस है मैट्रिक में कराची बोर्ड में। उसका पहला केस हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से वैसे जो है वो थ्योरेटिकल जितना भी वो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं सब ये मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। देखें, अब जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना के दे देता हूँ कि सपोज़ ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर से 2 स्ट्रिंग्स जा रही है। ठीक है, दोनों पे कुछ मास स्लॉटेड है, स्लॉटेड वेट्स लगाए गए हैं। ये मास A है, ये मास B है। इसको हम कह लेंगे M1, इसको हम कह लेंगे M2। दोनों पे ग्रेविटेशन भी अप्लाइड है और फोर्स भी अप्लाइड है। फोर्स अपवर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन ऐड कर रही है। सेम यही अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये जस्ट एन ग्राफिकल डायग्राम है बताने के लिए। अच्छा, ये डायग्राम वैसे आती है एग्ज़ाम में बनाना ज़रूरी होती है, या आप बुक से ले सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। मैं यहाँ मैथमेटिक्स समझाने के लिए बैठा हूँ। अच्छा, पहले जो हम बात करेंगे केस 1 पे, वो हम शुरुआत करने वाले हैं ऑन द डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए। ठीक है, यानी इसकी ये जो ए वाला मान जो नीचे आ रहा है, जिस पे टेंशन एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन अप्लाइड है M1G, हम उसकी बात पहले करेंगे। ठीक है, कि उस पर किस टाइप की फोर्स अप्लाई हो रही है, किस टाइप का एक्सीलरेशन है, टेंशन है, जो भी है। अच्छा, अब यहाँ बेसिकली वेट ज़्यादा है तभी ये नीचे खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम कहेंगे दैट W1 इज़ ग्रेटर दैन टेंशन। ऑब्वियसली वेट की वजह से ये जो है वो पुली को नीचे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टेंशन तो कम लग रही होगी, जो इसका फोर्स होगा मास का वो ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम कहेंगे वेट 1 इज़ ग्रेटर दैन T ऑब्वियसली। नाउ द फोर्स, जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है इस पर, तो मैं कहूँगा F1 इज इक्वल्स टू W1 माइनस T। ठीक है, द T गोज़ इन माइनस because here there is no so much tension required to be applied on the string. Okay, now we will take as a reference, as we know that W is about mg, W is equal to mg, so F1 is equals to m1g. Instead of W1 I will write m1g due to this reference minus T. Now considering Newton's second law of motion, which states that force is equal to ma. So applying on this case, I will say that F1 is equals to m1m. Okay, now what I will do, this is my equation number 1, and after applying Newton's law of motion, this will be my equation number 2. So when I combine both of them or compare or compensate, so I will write that comparing equations 1 and 2. I am just here to clear the logics. If you want to ask something, you can comment and write. Okay,
So our first is, now I will tell you how do we compare. हम compare कैसे करते हैं किसी भी दो इक्वेशन को. देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. कंपेयर कैसे किया जाता है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यूज़ है ना, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर आपस में किया जाता है. इनको नहीं, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है. ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे. पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन वाले के लिखेंगे जो कि है m1g माइनस टी इजिकल्स टू m1 है. ठीक है, ये सेकेंड वाले में. अब now I will make this as my equation number 3. Okay, now here the first one demand is solved, which was on the downward motion of body A. It is still here. Now the second one is on the upward motion of body B. Means I have to here discuss about this part, this one, not this one. Here I did this, not this one. Okay, now over here what we have to do, this is the second one, the second condition one applied on the body B's upward position. We are discussing about that. So here the tension is greater than the W2. Okay, see, since it's a less weight, ये कम वज़न है तो इसमें टेंशन ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये तो अपना जो है वो टेंशन कुछ नहीं डाल रहा, ये तो बस अपना मास फोर्स डाल रहा है. इस पे ज़्यादा टेंशन अप्लाई हो रही क्योंकि ये अपनी सस्टेनेबिलिटी जमा कर रखा है. आगे फोर्स का जब तस्करा करेंगे, F2 इजिकल्स टू 2 माइनस W2. Here the weight goes in minus, seeking the same reference as the previous one. F2 is equals to T minus M2G. Okay, because the second weight, we are considering the second weight, that's why 2 as a subscript. Same thing, applying Newton's second law of motion, F is equals to ma, since F2 is equals to m2a. This will be my equation number 5 and this will be my equation number 4. 1, 2 और 3 तो वो पहले वाला कंडीशन में बन गया. वही चीज़ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 and 5. M2A is equals to T minus M2G. This will be my equation number 6. Now the basic thing for acceleration on the bodies, both A and B. Now how I will calculate? I have to add equations 3 and 6. Okay, adding equations 3 and 6. Now how I will add? M1A is equals to M1G minus T, equation number 3. M2A is equals to T minus M2G.
equation number 6. I have to do plus m1a plus m2 on the left hand side and m1g, both are similar, plus t minus m2g. Taking out acceleration as a common, m1 plus m2, here plus t and minus t, opposite sides repel each other, g and g common, m1 minus m2 and g. Now making as a acceleration term, a is equals to m1 plus m2 divided by m1 minus m2 and g. Here we got the acceleration. Now for tension and another term, here this case 1 will be completed finally. How? Now dividing equations 3 and 6. Now I am going to divide equation 3 and 6. So m1a is equals to t minus m1g divided by equation number 6, m2a divided by m2g minus t. Okay, now a and a cancel, in division the both same variables becomes cancel. m1 will be multiplied by this, m2 will be multiplied by this, m1 multiplied by m2g minus t is equals to m2 multiplied by t minus m1g. Now m1 will be multiplied by this, then by this, first this, then this, same here, first this, then this. Okay, so m1 m2g plus minus m1t is equals to m2 will be multiplied by this, m2t, then plus minus m2 m1g. Now taking out the same things, m1t plus m2t, and these things are same, we combined it, 2 m1 m2g. Okay, now t and t common, t is equals to m1 plus m2 divided by 2 m1 m2 g, m1 m2g. Here the tension is proved and the case 1 is solved. Case 1 solved.